Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Muhammad Yousaf. Today I am going to discuss the general mechanism of synthesis, storage and secretion of various hormones. But as per my routine, I have selected an ayah from Surah Al-Ahzab, ayat number 21. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। कि यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्दा नमूना मौजूद है। ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद है। हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला की और क़यामत के दिन की तवक्को रखता है। लिमन काना यर्जुल्लाह, जो तवक्को रखता है, उम्मीद रखता है अल्लाह की, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन की, क़यामत के दिन की तवक्को रखता है और बकसरत अल्लाह को याद करता है। जिसको आखिरत में जो अबदई का एहसास है, उसको ईमान है, तो उसके लिए बेहतरीन नमूना ज़िंदगी गुजारने का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो उस जितनी हमारी ज़िंदगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मैच करती होगी, वही कामयाबी का जीना है, वही कामयाबी का ज़रिया है। अल्लाह पाक समझ अमल की तौफीक दे। So as I said, we are going to talk about synthesis, storage and secretion of various hormones, general mechanisms of hormones. We had classified the hormones in the previous lecture: protein hormones and steroid hormones and amino acid derivative hormones. The protein hormones, as you can imagine, the protein hormones, their synthesis is all the proteins are synthesized by the ribosomes, and the proteins which are to be secreted out mostly, they are synthesized in endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, by the ribosomes. The protein hormones, they are also synthesized by in the respective endocrine glands or endocrine cells in the form of a bigger protein, which is known as prohormone. That is, that has to be cut down into short form, that is the hormone. But original protein synthesis is a big protein which is known as prohormone, which is then converted into prohormone. Some amino acids are cut and smaller protein is left, and which is known as prohormone, and this occurs in the endoplasmic reticulum. And as we know, all the proteins are the secretions from the endoplasmic reticulum. They are taken into Golgi complex, and in Golgi complex the final conversion of these hormones into the prohormone into hormone occurs in the Golgi complex, and Golgi complex form the secretory granules which contain the hormone. In this form, the protein hormone may remain stored for some time in that cell, and at the time of requirement, these secretory granules are they secrete out their contents in the form of exocytosis, that is the secreted by the exocytosis. So protein hormone are synthesized by the endoplasmic reticulum like every secretory, and even enzymes are secreted like that. The hormones are also synthesized, the protein hormones are synthesized like that. Now, this diagram is showing you the process of the transcription process. As you know, all the proteins are synthesized by the transcription process, initially from the in the nucleus, and mRNA is formed according to the sequence of the nucleotides in mRNA. There are protein synthesis occurs in the ribosomes, and here in the case of the rough endoplasmic reticulum, prohormones and then prohormone in the endoplasmic reticulum occurs, and then it is delivered to Golgi complex, and in Golgi complex they are converted into hormone. So hormones are incorporated in these secretory granules, and they will be remain suspended or in the cytoplasm. They remain stored in the cytoplasm, and at the time of requirement they will be released.
And here you in diagram you can see this role of calcium, as you must have studied in your nerve muscle physiology, how the acetylcholine is released from the same calcium comes into this and is causes the exocytosis of these cells. So protein hormones are synthesized and secreted like this. Now this is now the steroid hormone, the second important group of the hormone, steroid hormones, which are the derivatives. Steroid hormones are derived from the cholesterol, and cholesterol is a lipid. These hormones, protein hormone may be stored for some time, but the steroid hormone, the very small amount is stored in the respective secretory cells. They are usually they are freshly prepared from the cholesterol or other precursors of the forms of the hormones there, and they are bound to plasma protein after secretion. When they are secreted into the extracellular fluid or into the blood, they combine with the plasma protein in the blood. They are bound to plasma protein and they are transported in combined form with the plasma protein. Now, anything which is bound to plasma protein has to be released to enter into the tissue, has to be released, and this release is a difficult process. It will take time. So the comparatively long latent period as compared to some other hormone, for example, epinephrine, norepinephrine, very quick action occurs. But these steroid hormone, they are synthesized initially. They are synthesized freshly. It will take time. They remain bound to plasma protein in the blood. That will also take time. They will be released after proper time into the tissue, and then they will perform their activity. And their mode of action, in next lecture we will discuss, their mode of action is also a long process. So they have got long latent period. That is initial production to the time of action, there is a long latent period of the hormones. Now these are the steroids. As in the previous lecture, in the first lecture, we talked about the cyclopentanophyllanthrin ring. You can see this is a cortisol. This ring is present in all these hormones. This is cortisol and aldosterone and estradiol and testosterone, female hormone, male hormone, mineralocorticoid. We will discuss these hormones. These are cortisol. They all have got this sterol ring in common. These are steroid hormone. You can cortisol addition, substitution at different level leads to the change of the hormone. Otherwise, basic structure sterol ring is there, in cholesterol ring is there. Storage and secretion of the hormone, the third type of the hormone. तो दी स्टेरॉइड हार्मोन की बात हमने क्या की, वो फ्रेश सिंथेसाइज होते हैं और रिलीज होने के बाद दे आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, इसलिए उनका लॉन्ग लेटेंट पीरियड है, जल्दी से उनका एक्शन नहीं होता. Now the third group of the hormone, derivative of the amino acid tyrosine. Thyroxines, the two thyroxines, T3 and T4, which are known as triiodothyronine and tetraiodothyronine, thyroxine usko bol dete hain. They are produced by the actions of enzyme in the thyroid follicular cells. Of course, the thyroid follicle mein sara kaam ho raha hai. When we discuss the thyroid gland secretion of these hormones, one detail mein discuss karenge. But so they are produced by the actions of enzymes. Amino acid tyrosine is converted into this T3 or T4, usko hum detail mein dekhenge, and secreted as part of thyroglobin. ये थायरोग्लोबिन एक बड़ा सा प्रोटीन सिक्रीट होता है इन दी थायराइड follicular cell, and these tyrosine, as you know, the tyrosine is a amino acid. It may be the part of that big thyroglobin molecule, and iodination of these tyrosine occurs. We will see at the time of the discussion about the synthesis of the T3 T4 at proper time. Iodination occurs. So iodination hoti hai kab? As they remain, the tyrosine are the part of that big thyroglobin. So thyroglobin is secreted, and then they are stored in that thyroglobin in the follicle. At the time of requirement, they are released by the this is the synthesis. ये synthesis है. That is the इस diagram में देख लें. This is the tyrosine iodinase इसके साथ combine करके one iodine is added. Then the two iodines are added. This is diiodotyrosine. ये हमारे आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन समझाने के लिए. And then this is the T3. That is triiodothyronine, 3 iodine इसके साथ लगे, and then this is thyroxine, 4 iodine लगे. This is enzymatic action. So these tyrosine are the part of the thyroglobin molecule, and this is the follicle.
Thyroglobin is colloid material collected here in the follicle, and those hormones are the part of this thyroglobin. And when they are to be released, jab chahiye, these cells they engulf some this thyroglobin, and they cause the digestion and the iodinated tyrosine, जिनको हम T3 T4 कहेंगे, they will be released into the blood. Now this is how this is the iodinated MIT, monoiodotyrosine, diiodotyrosine. They are and they are secretion of T3 T4 occurs by the colloid particle. They are engulfed by the cells and they are released into the secretion. इसको डिटेल में हम देखेंगे. यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये these हार्मोन उसका पार्ट होते होती है, रिलीज कैसे होते हैं. तो तीनों किस्म के हार्मोन की हमने बात कर ली. दैट इज दी प्रोटीन हार्मोन कैसे सिंथेसाइज होते हैं और दे आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, और स्टीरॉयड का क्या मैकेनिज्म है और इसका क्या मैकेनिज्म है. नाउ स्टोरेज एंड सिक्रीशन ऑफ दीज हार्मोन, ये तो हमारा जनरल टॉपिक है. एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये तो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स हैं. ये भी सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम दी प्रोड्यूस फ्रॉम दी टायरोसिन इन एड्रिनल मेडुला. ये भी उसी तरह के हार्मोन है, स्टोर्ड इन दी वेजिकुलर फॉर्म इन दी सिक्रेटरी वेजिकल देयर. यहाँ पे जरा सा फर्क है कि यहाँ से थोड़े प्री फॉर्म्ड हार्मोन्स आर प्रेजेंट देयर. दी T3 T4 फॉलिकल के अंदर सिक्रीट होके थायरोग्लोबिन के फॉर्म में पड़ी होती हैं, फिर उसको ब्लड में लेके जाना होता है. लेकिन ये उस सेल्स के अंदर stored in the preformed vesicles में पड़ी होती हैं and secreted by the exocytosis जब जरूरत होती है. मिसाल के तौर पर sympathetic stimulation is the stimulus for the release of these hormone. adrenal medulla से release होगी, so they will be secreted by the process of exocytosis. ये मौजूद थी and it will be released. Now ये वो प्रोसेस है, बायोकेमिकल डिटेल है. दिस इज द टायरोसिन और इट इज कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सी, जिसको डोपा पे कहते हैं, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन. और इसके साथ जब इसके अमाइन, ये एमाइन लग जाता है, दिस इज नोन एज डोपामीन. डोपामीन इज कन्वर्टेड इनटू नॉरएपिनेफ्रिन और फिर एपिनेफ्रिन भी इसी से कन्वर्ट होती है. डिटेल बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी. इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम द टायरोसिन. टायरोसिन और इस फॉर्म में मौजूद होती है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन पर रिलीज हो जाती है. नाउ ये डायग्रामेटिकल जो मैंने एनिमेट किया हुआ है, दैट इज द टायरोसिन. टायरोसिन के साथ ये OH लग गया, इट इज कन्वर्टेड टू डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, और उसके साथ जब NH ग्रुप ऐड हो गया इस पे, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू डोपामीन. डोपा इज कन्वर्टेड इनटू डोपामीन. डोपामीन इज देन कन्वर्टेड इनटू एडिशन ऑफ दिस OH here, it converts into norepinephrine, and addition of this methyl group here, it causes the conversion into the epinephrine. So these are the how these these are known as catecholamines. ये भी आपको आइडिया होगा. The epinephrine and norepinephrine both are collectively known as catecholamines. उनकी सिंथेसिस ऐसी होती है. ये एक डायग्राम आपको शो करने के लिए कि स्टीरॉइड्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्टिव स्टीरॉइड फॉर्म इन द टारगेट टिश्यू. मिसाल के तौर पर टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, वो ज्यादा एक्टिव फॉर्म में एक और फॉर्म में होती है, वो टारगेट टिश्यू में जब जाती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म. ये सिर्फ शो करने के लिए. फॉर एग्जांपल ये टेस्टोस्टेरोन है, टारगेट टिश्यू में इट कंबाइन विद इट्स रिसेप्टर, इट इज कन्वर्टेड इनटू, तो साइट ऑफ एक्शन पे इसमें तब्दीलियां होती हैं, और हार्मोन में भी तब्दीलियां होती हैं. हमने अभी तक क्या देखा? अभी तक हमने इसकी सिक्रीशन देखी और सिंथेसिस एंड सिक्रीशन देखी. नाउ ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, थोड़ी सी बात हमने इसमें कर ली है. दैट इज सम हार्मोन्स आर सिक्रीटेड विद इन सेकंड्स आफ्टर स्टिमुलेशन. जैसे अभी मैंने एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का बात की, विद इन सेकंड स्टिमुलेशन, किसी को गुस्सा आया, large dose of epinephrine is released into the blood. So some hormones are secreted within seconds after stimulation, or epinephrine and norepinephrine secreted just on stimulation of sympathetic nervous system, and they are destroyed and removed very quickly. जितनी तेजी से वो रिलीज होते हैं उतनी तेजी से वो डिस्ट्रॉय भी होते हैं, and have short duration. और उसके मुकाबले में some hormones have long release and long latent period. अभी हमने बात की थी स्टीरॉयड हार्मोन की. स्टीरॉयड हार्मोन दैट इज थायरोक्सिन इज आल्सो बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, एंड रिलीज स्लोली फ्रॉम द प्रोटीन,
एंड स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन भी होता है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। लॉन्ग वी कैन सी थायरोक्सिन बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन है, वो भी मुश्किल से रिलीज होगी और देर तक काम करती रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी उसका देर होगा। अदर्स हैव इंटरमीडिएट, कुछ हार्मोन जल्दी काम करने वाले, कुछ ज्यादा इंटरमीडिएट, डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द हार्मोन आर देयर। तो सारी हार्मोन का ऑनसेट का पीरियड, ऑनसेट ऑफ एक्शन डिफर्स, किसी का बहुत जल्दी होता है, किसी का देर से होता है। तो ये आज इस लेक्चर में हमने 3 बातें बात की, कैसे सिंथेसाइज होती हैं जनरली, किसी अलग हार्मोन, एग्जाम्पल के लिए हमने हार्मोन पकड़ी है, जनरल बात की है कि कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे स्टोर होती हैं, कैसे रिलीज होती हैं और उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, दैट विल बी दी जनरल मैकेनिज्म, अगेन द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जनरली बात करेंगे कि हार्मोन कैसे काम करती हैं। मिसाल के तौर पर इंसुलिन है, इंसुलिन कैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, क्या तरीका क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन कैसे काम करती हैं, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम लोगों को फायदा हो सके इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।